to constantly motivate and train my teams and project managers, and not only project managers but everybody across the board in doing, being more than translators, if you like, in having a little depth in life, in gaining more skill in the job that they do, in having pride in representing their brown skin when they go abroad, in being a little bit arrogant, if you like, right? Carry a little hubris. Hubris hota hai ki, you're bordering on arrogance. So I did want my people in my former software company to carry that little thing on their shoulder कि मैं भारतीय हूँ, मेरी brown skin है, and I'm one of the best around. Okay, and carry that little bit of attitude. Be of service but not be subservient. ये बहुत ही बार मैं सब लोगों को बोलता था, सर्विस और सबसर्वियंस में अंतर है. थोड़ा ज़्यादा अपनी स्टोरी में चला गया, मगर इसी तरह से मीडियोक्रिटी पे चर्चा हो रही थी डॉक्टर बजाज के साथ, और उन्होंने मुझे ये बात कही. So he immediately stopped me and said, Rahul, this is my biggest problem with secularism. And I was surprised, what's mediocrity and secularism? ये क्या बोल रहे हैं Dr. Bajaj? And he said something which I've paraphrased. I've shared this, I've written this in my blog post. My blog is called Doing the Right Things. It's on medium.com/doing the right things. आप देख सकते हैं. So वहाँ पर एक post है on, this post is called How Secularism Promotes Mediocrity in India. And I've written about my conversation with Dr. Bajaj over there. He said something like this, and I paraphrased. My biggest problem with secularism is that it does not allow us to teach our people about the greatness of the civilization we had, and therefore does not allow us for giving its current people a purpose of rebuilding it. With no such sense of grand purpose, India has been reduced to mediocrity. This is Dr. J.K. Bajaj. It was so powerful. मैं 2 minutes, I was in silence. I was stunned by what he said. He shared that there's a French philosopher called Ferdinand Braudel who has actually compared India and China, and why China grew massively post 1970s while India was a laggard completely. And Braudel, Dr. Bajaj told me, writes that Chinese can put up statements of belief in their factory stating, quote, we will do 10 years of work in one to rebuild the China of yore. मतलब पहले का चाइना, हमारा जैसी एक्सेलेंस ऑफ द एंशिएंट चाइना, हम उसे रिक्रिएट करेंगे 1 साल में, 10 साल का काम हम 1 साल में करेंगे. ऐसी स्टेटमेंट्स वो अपने फैक्ट्री फ्लोर्स पे लगा सकते हैं, मगर इंडियंस डोंट डू दैट. डॉक्टर बजाज ने बताया दैट फर्डिनांड ब्राउडल further says that the elite of China have a clear sense of purpose of rebuilding their civilization, and compared to them, India does not have any such purpose. Without a purpose, हम एक देश बना रहे हैं, nationalism फैला रहे हैं, क्या, what is that we are after? We don't have a clear mission. अगर मोदी जी नहीं होते और ये $5 trillion economy और ऐसे goal setting हमारे लिए audacious goal setting नहीं करते, we've been purposeless. Developed nation बन जाएंगे हम 47 तक बोलते हैं शायद, 2030 तक $5 trillion economy, world's 3rd biggest economy. ये सब, ये जो कांग्रेस और ये सब लोग SP, JDU ये सब बोलते रहते हैं जुमलेबाजी, इनको ये नहीं समझ में आता कि सारे कॉर्पोरेशंस ऐसे ही काम करते हैं. वो अपने लिए ऑडेशियस गोल सेट करते हैं जो उनकी रीच के बाहर होते हैं, और फिर उनके पीछे जाते हैं, और ये गोल सेटिंग करते हैं किसी पर्पस से, किसी सेंस ऑफ पर्पस से करते हैं कि हम
ये बनना चाहते हैं या ये अचीव करना चाहते हैं, ये अचीव करना चाहते हैं। हम हैं कौन, अगर वो हमारे में क्लैरिटी हो तो क्या अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमारी ड्राइव दुगनी चौगुनी हो सकती है। और यही डॉक्टर बजाज बता रहे हैं। मैं रिपीट करता हूँ, माई बिगेस्ट प्रॉब्लम विद सेक्युलरिज्म इज दैट इट डज नॉट अलाउ अस टू टीच आवर पीपल about the greatness of the civilization we had, and therefore does not allow for giving its current people a purpose of rebuilding it. With no such sense of grand purpose, India has been reduced to mediocrity. Powerful, very, very powerful. So this is a French guy talking about comparing, India and China. And in my post I have put the image of Ellora temple, Kailash Nath temple in Ellora. एक बड़े से ह्यूमंगस रॉक से काट के ऊपर से काटना शुरू करा विदाउट कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और काटते काटते 3, 4, 5 फ्लोर्स बना दिए, और नीचे टेम्पल का गर्भगृह बनाया, उसके अंदर शिवलिंग है, सब कुछ कार्व्ड आउट फ्रॉम अ मैसिव रॉक इन अ माउंटेन. Which society which is split by SC, ST, दलित, oppressive society जो women को oppress करती है, पिछड़ी जातियां जिसमें रहती हैं और constant society में strife रहता है, कौन सी ऐसी society ऐसा बना सकती है? बनाने वाले तो सब शूद्र थे ना, उनको डिजाइन करने वाले कौन थे? वो भी शूद्र थे. कोई व्यापारी बैठकर ये सब तो नहीं बनाते थे ना. स्कल्पचर्स कौन थे? हर किसी की अपनी साइंसेस थी. ऐसा कोई समाज जो इतना विभाजित हो, इतना टूटा हुआ, इतना डिवाइडेड हो, वो ये एक्सेलेंस अचीव नहीं कर सकता. और हमारे को क्या कहानियां बनाई जाती हैं ये DN झा और इन सब की करने से कि हम जातियों और कास्ट और जाति और यही सब चक्करों में पड़े रहते थे, तो ये एक्सेलेंस अचीव नहीं कर पाते. और जब ये लोग रिकॉग्नाइज कर भी लेते हैं कि हमने चलो कुछ अच्छा अचीव करा था, तो हमारे को ये रिमाइंड करवाते हैं कि चलो जो भी करा था ना, अब तो वो नहीं हो. चाहते क्या है ये बताना, हमारी नाक रगड़ना चाहते हैं